Hello everyone, sorry for the delay. Hello guys. Am I audible? What is Hey. time, sir? Cool. Any questions in the previous topic? Smoke testing, sanity testing का कोई question? हाँ ना तो बोल लो भाई. No, sir. Okay. No, sir. So उसके अलावा जो असाइनमेंट दिया था वो किया? Yes, sir. भेजो ग्रुप में, देखते हैं. और आज पढ़ते हैं यूजेबिलिटी टेस्टिंग. ठीक है. आवाज बहुत कम आ रही है तुम लोगों की. भेज दिया? Let me give it a check. कौन डाल रहा है? आशीष तुम डाल रहे हो क्या सर? असाइनमेंट? हाँ सर, डाल रहा हूँ. नहीं, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ तो सुना नहीं. डाल रहा हूँ सर, 1 मिनट. ओके. हेलो, लेट्स टेक इट अप एट द एंड. सब लोग जब तक डिप्लॉय करके रखो. लेट्स स्टार्ट विद यूजेबिलिटी टेस्टिंग. विल डू सम एक्सरसाइजेस एंड देन. ओके. व्हाई एम आई नॉट एबल टू शेयर? ओके, आ गया. इट्स रिकॉर्डिंग ना. कूल. रिग्रेशन. हाँ, रिग्रेशन पढ़ते हैं आज. ओके. देखो, व्हाट इज रिग्रेशन टेस्टिंग? सो रिग्रेशन टेस्टिंग कैसी टाइप ऑफ टेस्टिंग होती है हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, अगर किसी को ध्यान में रहे तो. To test the unchanged feature, whenever developer is doing some sort of change, we are testing the unchanged feature also with the change feature, just to make sure कि unchanged feature में कोई impact नहीं हुआ है सॉफ्टवेयर के. ठीक है. अब इसका कोई मेरे को लाइव एग्जांपल बता पाएगा क्या कि ऐसी टेस्टिंग तुम कब करते हो? जब तुमको पता है कि दूसरे पार्ट में कोई चेंज नहीं हुआ है, बट क्योंकि पहले वाले पार्ट में कुछ चेंज हुआ है, यू आर जस्ट मेकिंग श्योर कि सेकंड पार्ट इज अनइम्पैक्टफुल. समझ रहे हो? कोई रियल टाइम एग्जांपल बता पाएगा क्या? सर क्वेश्चन फिर से सर बता दीजिए एक बार. सो क्वेश्चन इज दैट कि रिग्रेशन टेस्टिंग एक ऐसी टाइप ऑफ टेस्टिंग होती है जो हम लोग अनचेंज फीचर पे करते हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि जो चेंजेस दूसरे फीचर में डेवलपर ने किए हैं, या फिर जो जो फीचर के दूसरे पार्ट में जो डेवलपर ने चेंज किए हैं उसको तो टेस्ट करेंगे ही करेंगे. चेंजेस को टेस्ट करेंगे ही करेंगे. जो एनहेंसमेंट आई है या जो बग फिक्स आया है उसको तो टेस्ट करेंगे ही करेंगे. बट उसके साथ साथ हम अनचेंज फीचर को भी एक बार और टेस्ट कर लेते हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि इस चेंजेस की वजह से दूसरा पार्ट इम्पैक्ट तो नहीं कर रहा है, ये सोच के. तो इसका कोई मेरे को एक रियल टाइम एग्जांपल बता दो. कब तुम ऐसी टेस्टिंग करते हो जब आप ये मेक श्योर करने के लिए दूसरे अनचेंज पार्ट को भी टेस्ट करते हो कि चेंजेस ने उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट तो नहीं किया. ओके. सर अभी व्हाट्सएप में जैसा पे फीचर आया है, तो वो पे फीचर इंट्रोड्यूस होने के बाद हम चेक करेंगे कि चार्ट फीचर, वीडियो फीचर कुछ अफेक्ट हो रहा है कि नहीं. एग्जैक्टली. कूल. ठीक है, क्योंकि वो उसी मॉड्यूल के अंदर है. तुम्हारा स्टिकर्स या इमोजीज वाला चीज भी उसी मॉड्यूल के अंदर है. So if you're just testing while pay, you're just testing that other feature inside that particular module is getting impacted or not. That is called as regression testing. But मैं like इसका नहीं पूछ रहा था. मैं पूछ रहा था कोई एक रियल टाइम एग्जांपल बताओ कि जैसे मैं देता हूँ ना एग्जांपल, व्हीकल, पेन, बॉटल, ऐसे वाले. सर इन लैपटॉप. ओ भाई, go ahead.
Hello. Yes. Hello. Hello. Yeah. Yeah, you are audible. Sir, in a laptop, if OS is changed, then it will impact other features. प्रॉपर डिफाइन करके बताओ, क्या एग्जांपल लेके, ओके ठीक है, ये चीज चेंज हुई है तो इसका इम्पैक्ट अदर मतलब क्या, कौन सी फीचर पे इम्पैक्ट करेगा ओएस चेंज होगा तो? Sir, these features, sir, those features in which there were no bugs or changes. ओके ठीक है, एक बेटर एग्जांपल लेते हैं। कुछ अच्छा सा सोचने दो। ओके ठीक है, एक वाटर बॉटल है, ठीक है, तो अर्लियर दैट वाटर बॉटल इज मेंट टू कीप योर कोल्ड वाटर कोल्ड, ठीक है। एक वाटर बॉटल तुमने ली और उसका रिक्वायरमेंट ये था कि ये वाटर बॉटल में इफ यू आर पुटिंग लाइक कोल्ड वाटर, इट इज कीपिंग इट एज कोल्ड, ठीक है, as for 1 hour or 2 hour or something like that, ठीक है, 2 hours, let's assume 2 hours. Then what they did, they upgraded that particular water bottle. Now your water bottle can also support hot water up till 2 hours, ठीक है। So अब तुम जब ये टेस्ट करोगे the new change, you will definitely gonna test the change, correct, whether your water bottle is capable of having that hot water hot for 2 hours. Now also you will check whether after implementing this particular change, your previous feature which was working fine previously is not getting impacted. Means now also after implementation of this new feature of hot water, keeping hot water hot, the earlier feature cold water cold should up to 2 hours should also be working fine. So we will go, we will first put hot water, wait for 2 hours, check the temperature, then you again empty the bottle, put the cold water, check whether the cold water is cold up to 2 hours. Getting my point? Got the understanding? Yes, sir. Cool. Yes, sir. So इसी को regression testing बोलते हैं. What is regression testing? Testing the unchanged feature to make sure that changes could be anything. देखो जरूरी नहीं है कोई new feature implementation को ही change बोला जाए. It could be a deletion of feature. It could be updation of or modification of feature, and it could be any kind of bug fix. वही updation में ही आ जाता है, modification of feature में ही bug fix आ जाता है, and addition of new feature, implementing a enhancement, implementing a new feature itself. ठीक है? तो ये किसी भी टाइप के चेंजेस अगर तुम देखते हो एप्लीकेशन में, एंड यू हैव दैट थिंग इन योर माइंड दैट ड्यू टू दिस रीजन this particular area of the software might get impacted. A very common example of this, for an example, you have compose have attachment feature. Earlier attachment can only support two formats, PDF and the word format. Now you can also attach PNG. They have done some sort of changes. अब देखो कोई चीज को सपोर्ट करने में, कोई चीज को एनहांस करने में, they have to go to the program and do the changes, correct? Now if they are opening the program and doing the changes, there might be chances they will make some sort of mistake, they may make some sort of mistake, correct? So if you are making sure that it is working fine in Compose and same attachment is being reflected in inbox and send item etc places, you have to do the testing of other module which is related to that particular change. Okay, so that the testing of other module, other areas of module, other areas of other module, basically areas of other module, basically if you are testing that with respect to this change, that is called as regression testing. Got the understanding? Yes, no, anything? Yes, sir. Cool. Now when you are testing, when you are doing the regression testing, what exactly you're gonna do? You will gonna re-execute the same test case. Now when we are saying that re-execution means you have already executed these particular test case. For an example, we are talking about inbox. Now inbox we have already tested earlier with PDF and word format. We have executed this test case. After the change, we'll re-execute. We have to do the modification, bit of modification in our test case, and then we'll re-execute the same test case
exactly same test case and then try to make sure it is working according to the requirement. Okay, got the understanding? Yes, sir. Cool. So there is no such type of testing. If you think on a higher level, there is no such type of testing called regression testing. But we are doing the same FT, IT, ST, whatever we were doing. But the concept is that whenever you are doing these type of testing with the respect to another change, to make sure the unchanged feature is not getting impacted, that is called as regression testing. Got the understanding? Yes. Yes, No? sir. Cool. Yes, अब sir. देखो रिग्रेशन टेस्टिंग और रीटेस्टिंग में क्या फर्क है फिर? You are retesting the same module which is already tested earlier, correct? तो regression testing और retesting में कोई फर्क नहीं है. Retesting is basically testing the feature again. Regression testing is also you are doing the same thing, right? Unchanged feature, you are testing it again, correct? This is the very Yes. frequently Yes, sir. asked question. What is the difference between regression testing and retesting? Okay, so retesting is exactly unit regression testing. Now, but regression testing have some sort of approaches. First is unit regression testing approach, second is regional regression testing approach, third is full regression testing approach. So there are certain differences in regression testing and retesting. We'll keep this after studying all these three. Okay? We'll try to understand it after studying all the three type of regression testing. First one is unit regression testing. अब देखो unit regression testing का फंडा एकदम सिंपल है. टेस्टिंग ओनली द चेंजेस और द बग फिक्सेस. तुम क्या करते हो? कॉन्सेंट्रेट यहाँ पर एग्जैक्टली जो चेंज होता है उसी को बस टेस्ट करते हो. ऑल्दो इट इज कॉन्फ्लिक्टिंग द concept of regression testing, but the concept is this only. Unit regression testing is basically testing only the changes which is done in the program basically. हो सकता है वो चेंज कुछ भी हो, अपडेशन ऑफ मॉड्यूल हो, डिलीशन ऑफ मॉड्यूल हो, और मॉडिफिकेशन ऑफ मॉड्यूल हो, कुछ भी हो सकता है वो चेंज, बग फिक्स वगैरह कुछ भी हो सकता है. तो जब तुम प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो उसी चेंज में, that is unit regression testing. You are not bothering about any other feature in the software, but you are totally concentrating on what? Totally concentrating on the change. Got it? That is unit regression testing. You are focusing on the unit. Okay, that is going to change. Got it? Yes, sir. Cool. Now coming up to regional regression testing. This makes more sense. This is more practical, right? Unit regression testing says that we are testing the changes and only the impacted areas of the particular software, of the particular module. When you are testing the changes, means whatever you are covering as part of unit regression testing, the change that you are covering here, and also the impacted area. Now, what is impacted area? For an example, we are taking the same example, right? Compose and inbox wala, okay? The attachment wala. So what developer has done? Developer has went to the program of Compose attachment. They have done some modification to get it support for one more format called PDF. Let's say PDF. Okay. Now what we are doing, we are testing the change, means we are going to compose and testing whether the particular person is able to compose a mail with the attachment of PDF, and also we are testing the impacted region of other features, other modules. Now we are not testing the other module, we are not testing the whole inbox, but rather than that, we are just concentrating on the impact region of the inbox. Getting the point? So basic idea is that whenever you are going to test the impacted module, you are not concentrating on the whole module but only the impacted area. So you will go to the inbox and only test whether the PDF is reflecting there or not. You are not testing any sort of things in the inbox apart from that. समझ रहे हो? नहीं? Yes? No? Anything? Please repeat. Cool. So मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? We are doing only the impacted region testing as part of regional regression testing. That's why it is called as regional. हम लोग पूरा दूसरा मॉड्यूल नहीं टेस्ट करते हैं. जैसे हमारे कंपोज में कोई फीचर पे डिफेक्ट आया है, वो डिफेक्ट फिक्स हुआ है,
then we are not doing regression testing on whole inbox, whole send item. Rather than that, whatever part of inbox or whatever part of send item is being impacted, that part we are retesting, that part we are doing the regression testing. Getting a point? That's why it is called as regional regression testing. इसका एक example लेते हैं. For an example, तुम अपने गाड़ी ठीक करवाने जाते हो, there is a bug in your vehicle, that seat is not getting inclined. ठीक है? ठीक है? So you will go and you will get it fixed. Your seat is getting fixed. Now your seat is electrically operated. So there are 3 different places from where you can basically adjust your seat. So first from your steering wheel, second from your dashboard, and third from your seat itself. Seat के नीचे भी एक बटन है. You can just press it and it will basically auto adjust. ठीक है? तो बेसिक आइडिया है, अगर तुम्हारे सीट में एक डिफेक्ट है तो तुम वो डिफेक्ट तो फिक्स होगा तो उसका रीटेस्टिंग करोगे. तो यू विल जस्ट गो एंड यू विल चेक कि सीट एडजस्ट हो रही है कि नहीं, किससे? तुम्हारी सीट के बटन से, करेक्ट? बट यू विल आल्सो मेक श्योर यू आर डूइंग द रिग्रेशन टेस्टिंग ऑन स्टीयरिंग व्हील एंड डैशबोर्ड. But regional regression testing क्या बोल रहा है? You will not test whole steering wheel, you will not test whole dashboard electronic system, you will just concentrate on the button and you will just make sure कि वो button से seat adjust हो रही है कि नहीं हो रही. Getting my point? Yes, Dashboard वाले button से और steering wheel वाले button से. The thing is that regional regression testing में हम लोग जब भी बात कर रहे थे ना, तो we are testing कि इस मॉड्यूल का के ऊपर इम्पैक्ट है तो ये मॉड्यूल टेस्ट करना है. बट रीजनल रिग्रेशन टेस्टिंग ये बोल रहा है कि वो मॉड्यूल का वो पार्ट टेस्ट करना है. समझ रहे हो? जो इम्पैक्टेड है. समझ गए सब? yes sir. जैसे स्टीयरिंग व्हील मॉड्यूल था, स्टीयरिंग व्हील पूरा फीचर था, पूरे फीचर का वो पार्ट जहां से वो सीट एडजस्ट होती है, वो बटन जहां से वो सीट एडजस्ट होती है. ठीक है? नाउ द पॉइंट इज दैट in order to identify that particular region, first of all we need to identify कौन कौन से मॉड्यूल इम्पैक्टेड. करेक्ट? अभी मैं तुमको बोलूंगा कंपोज के अटैचमेंट में चेंज है. अगर तुमको टेस्ट करना है कि कंपोज से कौन कौन सा रीजन इम्पैक्टेड है और उसको टेस्ट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड कौन कौन सा मॉड्यूल इम्पैक्टेड है, तभी तो उसका रीजन ढूंढोगे. तो देयर इज अ प्रोसेस टू आइडेंटिफाई इम्पैक्टेड एरिया, इम्पैक्टेड मॉड्यूल, कि कौन कौन सा मॉड्यूल इम्पैक्टेड है. तो सबसे पहले होती है बेस्ड ऑन योर प्रोडक्ट नॉलेज यू विल गेट इट. जैसे मैंने तुमको अभी बताया कि कंपोज के इधर इधर पर्टिकुलर डिफेक्ट है, इधर डिफेक्ट था और उन लोगों ने फिक्स किया, या फिर इधर इधर एनहांसमेंट था. तुमको बताना है कि कौन कौन सा मॉड्यूल इम्पैक्टेड है. यू विल लिस्ट डाउन एवरीथिंग, क्योंकि तुमको ये जीमेल के बारे में पूरा पता है कि कहाँ से डेटा फ्लो होता है, कौन सा मॉड्यूल कौन से मॉड्यूल से रिलेटेड है. अगर मैं बोलूँगा कंपोज में चेंजेस हुए हैं और क्या साइन ऑफ में इम्पैक्ट करेगा वो, तो तुम लोग बोलोगे नहीं. कैसे बता रहे हो ये सारी चीजें? बिकॉज यू नो हाउ जीमेल फंक्शंस, you have the product knowledge of Gmail. So based on your product knowledge, you will get to identify that this is the area which is getting impacted. I know from here to here there is a data flow. That's why in order to make sure that the data is transferring properly, I need to do the testing whether it is reflecting properly there. The other module is not getting impacted. Got the point? सबको समझ में आया? So someone asked a question in chat. Okay, let me go through it. Is unit regression testing and retesting same? Yes, it is exactly same, but ये interviewer के सामने नहीं बोलना होता है. they will not फिर वो बोलेगा कि like I just want you to understand कि interview drive तुम भी करते हो. तो अगर तुम ये यूनिट रिग्रेशन टेस्टिंग और ये रीटेस्टिंग सेम है बोल दोगे तो he will ask multiple question कि फिर ये दोनों सेम है तो दो कॉन्सेप्ट क्यों बनाए गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. You don't want to get into that kind of conversation while interviewing. So just say that whenever they ask you what is regression testing and retesting, unit regression testing के points तुम retesting में बोल सकते हो, regional regression testing और full regression testing के points तुम कहाँ बोलो? regression testing में बोलो. मैं बताऊंगा कैसे आंसर करना है at the end of this session. ठीक है? Got it? Sir, unit testing and Not unit regional testing. regression. Unit regression testing. Yes, sir. Unit regression testing and
रीजनल रिग्रेशन टेस्टिंग वो कंपोज जीमेल यूज करके एक एग्जांपल दीजिए। ठीक है, देखो यूनिट रिग्रेशन टेस्टिंग का फंडा यही है कि तुम सिर्फ चेंजेस को टेस्ट करते हो। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि तुमको कंपोज में अटैचमेंट पे चेंजेस हुए हैं और अटैचमेंट पे बेसिकली नाउ यू कैन अटैच पीडीएफ आल्सो, ठीक है। तो एज पार्ट ऑफ यूनिट रिग्रेशन टेस्टिंग तुम क्या करोगे, यू विल ओपन द जीमेल, यू विल गो टू कंपोज, यू विल ट्राई टू अटैच पीडीएफ। अगर वो अटैच हो जाता है, द टेस्ट इज फाइन, नाउ टेस्ट इज पास बेसिकली, ठीक है, क्योंकि तुमने वो रीजन वो पर्टिकुलर impacted not impacted area, the change, whatever the change is there, you have tested that and you are done with unit regression test, unit regression testing. Now in order to do the regional regression testing, you will attach that pdf and send it to someone, go to the inbox and check that whether the pdf is getting reflected or not. That is regional regression testing, because you are testing a certain region of a different module which is getting impacted. समझ रहे हो? यस सर। Cool. सबका क्वेश्चन क्लियर हो गया? Let us move ahead. So मैं तुमको बता रहा था इम्पैक्टेड एरिया कैसे ढूंढते हैं। सबसे पहले तो डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोडक्ट नॉलेज, सेकेंडरी बाय कंडक्टिंग इम्पैक्ट एनालिसिस मीटिंग। नाउ ये एक मीटिंग होती है, whenever developer give you build note, they will give you build with a release note. अब ये रिलीज नोट क्या होता है? रिलीज नोट तुम लोगों ने देखा होगा, जब भी कोई एप्लीकेशन अपडेट करते हो या डाउनलोड करते हो, दे विल गिव यू अ नोट, रिलीज नोट, सेइंग दैट कि ओके दीज आर द न्यू थिंग्स वी हैव एडेड, these are the changes we have done in the new version of the software compared to the earlier version of the software. देते बताते हैं कि ये चेंज है, करेक्ट सर दैट इज आल्सो कॉल्ड चेंज लॉग। change log, correct. So basically they call it, we used to call it as release note, ठीक है। तो release note मिलता है ना, तो developer mention each and every change they have done there in the software, ठीक है। वो programmatically mention नहीं करते, but the software level they will mention कि okay I have done some sort of changes in compose, this is change in send item, this is change in here and there, we have added a new feature here, so they will give a release note, complete release note, ठीक है। Then basically when you get the release note, you all sit together to do the impact analysis meeting. Who sit together? We all whole testing team sit together, ठीक है। They conduct an impact analysis meeting wherein they just call out, this is my feature, this is here, this is there, they are changing it, and this might impact this particular feature. Depending upon their product knowledge, they will say okay. So जैसे हम लोग हैं, आशीष, मैं और 2-3 लोग बैठे हुए हैं, रश्मि and all, right? So if my feature is getting changed, I'll read the release note and I'll understand okay what is changed. I will call it out in front of everyone saying that okay this is the part of the thing which is going which is changing in my module, and this might impact Ashish's module. So Ashish will try to rectify which exactly part is being impacted and then try to do regional regression testing. ठीक है? Got it? Yes, no, anything? यस सर। Cool. So this is all about impact analysis meeting. कुछ नहीं होता है इसमें, just we'll sit together, try to identify which all features is getting impacted and which all part of the feature is getting impacted, so that we can do what? We can do regional regression testing. ठीक है? Now there is one more thing which you can do in order to find what all module is getting impacted. That is preparing impact matrix. अब impact matrix क्या होती है? It's just like a basically chart or a table, ठीक है। So here one particular column will be made for the changes. Here you will write all the feature name which is having the changes. For an example, attachment हो गया change, attachment में कुछ change हुए हैं, forgot password में कुछ change हुए हैं, and another like this whole row is dedicated for the different module which is there inside your application. सारे module के नाम तुम यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। Now you will try to rectify कि ये particular module के change में यहाँ impact होगा कि नहीं, इस module पे impact होगा कि नहीं। So is the attachment is impacting sign up? If yes, you will write yes. If no, you will write no. ठीक है। ऐसे ही करके तुम हर particular module से check करोगे कि यहाँ ठीक है, ये attachment का compose पे impact होगा क्या? Yes. Attachment का send item पे impact होगा क्या? Yes.
अटैचमेंट का सेव ड्राफ्ट पे होगा क्या? यस. अटैचमेंट का चेंज पासवर्ड पे होगा क्या? नो. फॉरगॉट पासवर्ड का साइन अप पे होगा क्या? नो. फॉरगॉट पासवर्ड का कंपोज पे होगा क्या? नो. फॉरगॉट पासवर्ड का सेंड आइटम पे होगा क्या? नो. फॉरगॉट पासवर्ड का सेव ड्राफ्ट पे होगा क्या? नो. बट फॉरगॉट पासवर्ड का चेंज पासवर्ड में होगा क्या? यस. So this is called as an impact matrix, wherein wherein we have to write changes in one particular column, and another columns will be dedicated for the remark whether this particular change has the impact on that particular feature or not. Okay, this will be used in order to rectify whether all the features is being covered, in order to check whether it is there any impact. ठीक है? Got it? Yes, sir. So ये इससे तुम 110% make sure कर लो कि कोई भी मॉड्यूल छोटा नहीं. While doing impact analysis meetings, there might be chances one or two feature you might miss because you are talking on basically calls or what meeting, right? But on paper, if you are doing things, you'll get to understand more. Okay. Got the Yes, sir. understanding? देखो रीजनल रिग्रेशन टेस्टिंग यही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है. इसमें कोई दिक्कत? No? Yes? No, sir. Cool. Now coming up to full regression testing. Full regression testing एकदम इजी होता है, बट बहुत मेहनत लगती है इसको करने में. यहाँ पर तुम पूरा सॉफ्टवेयर टेस्ट कर लेते हो, इररिस्पेक्टिव टू चेंज और अनचेंज पूरा सॉफ्टवेयर तुम टेस्ट कर लेते हो. Testing the changes and the remaining all features which is there inside your application, that is called as full regression testing. Now ये क्यों किया जाता है? Basically अगर तुम्हारा defect fix या फिर तुम्हारा change जो है root of the software में है. Now root of the software, basically one functionality or one particular algorithm, one particular program can be considered as a root of the software. And you know, due to this particular change, every part of the software will get impacted. Every corner of the software will get impacted. Now, in this particular case, if you see that, yeah, this particular change, this particular fix or whatever they have done, program change, right, will gonna impact every corner of the software. You'll not waste your time in order to basically rectify कि कौन सा region impacted है, because you will mostly found every corner ना अगर in the impacted region, so you will not waste your time in doing the impact analysis meeting and doing the impact matrix. Rather than that, what you will do, you will try to do what? You will try to basically test the whole software and then make sure that every corner of the software is working fine. ठीक है? Got it? Hello. Yes, Come sir. on. Yes, Cool. sir. So basically you will test the whole software. मैं यही बोलना चाह रहा था. So which is more practical to do? What do you think? We should go with full regression testing or regional regression testing or unit regression testing? What do you think? What is more preferable? For full regression testing. What about others? देखो यार, full regression testing is a time taking process, right? Correct? अगर तुम पूरा सॉफ्टवेयर वापस से टेस्ट कर रहे हो, it will take a lot of time. Correct? और हर बार ये करना तो पॉसिबल नहीं है. अगर हर बार कोई चेंज आ रहा है, हर 6 दिन के बाद या 8 दिन के बाद तुम्हारे पास कोई नया फीचर आता है, अगर नए फीचर के हर बार आने के बाद तुम फुल रिग्रेशन टेस्टिंग करने जाओगे, तो बेसिकली इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. ऑल्दो ये रिग्रेशन टेस्टिंग मोस्टली ऑटोमेशन से हैंडल होती है. तुम जस्ट क्लिक करते हो और पूरा चीज एग्जीक्यूट होता है जस्ट टू मेक श्योर एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन. बट दैट एग्जीक्यूशन आल्सो टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. 1 या 2 दिन का टाइम ले लेता है. तो बेसिक आइडिया इज दैट कि क्या किया जाए, कौन सी टेस्टिंग अप्रोच बेटर है, क्योंकि रीजनल रिग्रेशन टेस्टिंग में देयर इज अ चांस कि तुम कोई फीचर मिस कर दो टेस्ट करना. देयर इज अ चांस बिकॉज वी आर थिंकिंग, राइट, we are thinking, we are deriving scenarios, we are writing things, right? Although we have to execute the same test cases,
बट हम लोग को ये तो डिसाइड करना है कि कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है. देयर माइट बी चांसेस, वी आर ह्यूमंस, देयर माइट बी चांसेस वी विल मिस सम ऑफ द फीचर व्हिच नीड्स टू टेस्ट. वो क्या अप्रोच लिया जाए कि पूरा फीचर ए टू जेड रिग्रेशन टेस्टिंग हो भी, और ऐसा कोई सरप्राइज ना मिले हमको डिप्लॉयमेंट के बाद कि ये चीज ब्रेक हो रही थी ड्यू टू दिस चेंज. हम लोग ये सोचते रहे कि हम लोगों ने तो ये पहले टेस्ट कर रखा हुआ है, इट विल वर्क फाइन. बताओ. सर यूनिट रिग्रेशन टेस्टिंग. यूनिट रिग्रेशन टेस्टिंग में तो डेफिनेटली तुम मिस करोगे, समझ रहे हो. यूनिट रिग्रेशन टेस्टिंग में तो सिर्फ तुम चेंज टेस्ट करते हो, बाकी पार्ट चेंज, बाकी पार्ट्स को तुम टेस्ट करते ही नहीं हो. करेक्ट. तो यूनिट रिग्रेशन टेस्टिंग में तो फॉर श्योर तुमको डिफेक्ट मिलेंगे. अगर तुम सिर्फ यूनिट रिग्रेशन टेस्टिंग करके सॉफ्टवेयर पुश कर रहे हो तो फॉर श्योर यू विल फाइंड डिफेक्ट्स. तो क्या किया जाए, द बेटर अप्रोच. हाँ बोलो. सर रीजनल रिग्रेशन टेस्ट. तो रीजनल रिग्रेशन टेस्टिंग में भी देयर इज अ चांस ऑफ मिसिंग अ बग. अब फुल रिग्रेशन टेस्टिंग तुम हर बार कर नहीं सकते हो बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ टाइम टेकिंग प्रोसेस. So the better approach is that after 2 or 3 cycles of regional regression testing, तुम 2 से 3 साइकिल रीजनल रिग्रेशन टेस्टिंग ही करो टू सेव योर टाइम. ठीक है. एनालाइज करो, बग फाइंड एनालाइज करो, इम्पैक्ट एरिया फाइंड करो, और तुम क्या करो, रीजनल रिग्रेशन टेस्टिंग करो. आफ्टर फ्यू साइकिल्स, बेसिकली आफ्टर फ्यू साइकिल यू डू द फुल रिग्रेशन टेस्टिंग. हर 2 या 3 साइकिल के बाद you again do the full regression testing so that you will make sure that every corner of the software is tested and nothing is getting impacted. Sir, automation uses regression testing. Automation, whatever testing you are doing right now, everything will be done via automation also. ठीक है. तो जो भी तुम करते हो पहले मैनुअल होता है, मैनुअल में जब स्टेबल हो जाती है, तुमको पता चल जाता है फंक्शनैलिटी स्टेबल है, उसके बाद ऑटोमेशन होता है उसका. ठीक है. या तो पैरेलल ऑटोमेशन होता है. पहले तुम मैनुअल टेस्टिंग करते रहते हो, वो लोग भी ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिखते रहते हैं, मैनुअल टेस्टिंग खत्म होती है, ऑटोमेशन टेस्टिंग एग्जीक्यूट होती है और हो जाता है. ठीक है. Which type of regression testing is more effective to find defect in automation? So देखो, तुम्हारा जो ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिखेगा ना, तो वो इस तरीके से फुल रिग्रेशन टेस्टिंग के तरीके से ही लिखा रहेगा. ठीक है. सो बेसिकली बिकॉज इट्स whenever they want to test the application with respect to certain change, तो तुम उन स्क्रिप्ट में से कुछ टेस्ट केसेस पिक करोगे और फिर एग्जीक्यूट करोगे, और तुम या तो पूरे टेस्ट केस भी एग्जीक्यूट कर सकते हो. तो लिखा तो सबका रहेगा. तो बेटर अप्रोच यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू आल्सो डू फुल राउंड ऑफ few rounds of regional regression testing depend upon the impacted area. And if you feel that कि नहीं ये particular change तो हर कॉर्नर को इम्पैक्ट करेगा, then you execute all the test cases. ये कब होता है, whenever you are trying to deliver, तुम कोड फ्रीज करते हो और तुम्हारा टेस्टिंग हो जाता है ना, पूरा टेस्टिंग फेज के बाद रिग्रेशन फेज चलता है. And when you are done with all your testing, regression phase चलता है. regression में automation से पूरी और manual से पूरी test case वापस से execute की जाती है just to make sure nothing is getting impacted. regression में तो वैसे भी low होता है, मतलब थोड़ा कम ही होता है काम, but automation पे पूरे test case execute किए जाते हैं to make sure every corner of the software is working fine. ठीक है. Because sign off देना होता है ना, we have to give sign off and we have to deliver the bill to the customer. That's why we do regression testing. ठीक है. Got it? So the better approach is this. For manual, I'm saying better approach is this only. First do few rounds of regional regression testing and then try to jump on to full regression testing after every 2 or 3 cycles, just to make sure every corner of the software is working beautifully. No impacted area is there which is having a bug. Okay? Got it? Yes sir. Cool. अभी देखते हैं. एक ये इंडिविजुअल टॉपिक है, ये रिग्रेशन टेस्टिंग के साथ नहीं है, बस यहाँ पर लिखा हुआ. एक टॉपिक है ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स. ठीक है. ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स क्या होता है और क्यों बनाया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ डॉक्यूमेंट. एक डॉक्यूमेंट होता है which derives or checks that each and every test case have got at least each and every requirement have got at least one test case. देखो ये एकदम हम लोग जनरल लेवल पे जो वो करते हैं ना, हम लोग लिस्ट बनाते हैं.
चेकलिस्ट बनाते हैं, जैसे तुमको अभी मार्केट जाना है कुछ काम कुछ सामान लेने के लिए, तो यू विल क्रिएट अ चेकलिस्ट, करेक्ट, कि ओके ठीक है, ये लाना है, ये लाना है, ये लाना है, तो one particular column you'll write all the product, and another particular column you just do the check, you have picked it or not, done or something like that, right? So that you are not missing out of anything which you need to pick and you have not picked while shopping. करते हो ना ये डे टू डे लाइफ में सब लोग, checklist type of thing, Yes, sir. wherein you because why do you make that particular list checklist? Just you need to make sure that every particular product which is there in the list, you are making sure you are picking that all of the product with you while going home, correct? So ये same thing हम लोग क्या करते हैं requirement के साथ करते हैं, हमको हर requirement के ऊपर क्या लिखना रहता है, test case लिखना रहता है, correct? हर रिक्वायरमेंट के ऊपर टेस्ट केस लिखना रहता है, देयर माइट बी चांसेस यू माइट मिस राइटिंग सम ऑफ द टेस्ट केसेस फॉर द रिक्वायरमेंट्स, राइट? कैसे? देखो, अगर तुम यहाँ पर 50 रिक्वायरमेंट है, अब 50 रिक्वायरमेंट में से तुम 30th को बोलो कि मैं ना आखिरी में करूंगा, 50th के बाद मैं 30th वाला रिक्वायरमेंट पे टेस्ट केस लिखूंगा, तुमने बाकी के पूरे 50 रिक्वायरमेंट किए टेस्ट केस लिखे और तुम भूल गए कि तुमने 30th को छोड़ रखा था लास्ट में करने के लिए। अब तुम क्या करोगे, तुम उसके ऊपर टेस्ट केस लिखोगे ही नहीं। अब टेस्ट केस नहीं लिखोगे तो वो टेस्टिंग नहीं करोगे तुम, क्योंकि टेस्टिंग तो तुम बेसिकली टेस्ट केस की बेसिस पे ही करते हो ना। अगर टेस्ट केसेस ही नहीं होगे तो फिर बेसिकली टेस्टिंग नहीं होगी, करेक्ट? अब टेस्टिंग नहीं होगी तो बेसिकली उस पार्ट पे डिफेक्ट हो गए तो पता नहीं चलेगा और फिर वो लाइव हो जाएगा, और लाइव होने के बाद अगर डिफेक्ट कॉट होता है तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? बेसिकली हमारी होगी, करेक्ट? So the basic idea is that we call it a traceability matrix. We used to write the requirement at one end. यहाँ पर requirement लिखते हैं, ये पूरी requirement हो गई हमारी requirement, high level requirement and low level requirement basically, ठीक है? जैसे ये लोन हो गया, लोन मॉड्यूल हो गया, लोन मॉड्यूल के अंदर पर्सनल लोन, होम लोन, मॉर्गेज लोन। अंडर द पर्सनल लोन यू आर राइटिंग like basically more lower level requirement, which is basically your apply for home loan and basically repay home loan offers, something like that, whatever feature is there inside personal loan. So you will write that, and then once you're done with mapping the requirement, you will map the manual test case and automation test case with that, okay? Every time you see a requirement, you write a test case and you will write just the name of the test case, okay? Here, if you are writing it here and you are basically after 2 or 3 days revisiting this document, you can make sure that हाँ कि हर एक requirement के लिए मैंने क्या किया है, test case लिख रखा है, ठीक है? So you will not miss out of anything. समझ गए? Yes, no, anything? Yes, sir. So this is just like a checklist for the test case, कि तुमने हर रिक्वायरमेंट के लिए एटलीस्ट एक टेस्ट केस तो लिख रखा है, ठीक है? सो वंस यू आर डन विद दिस काइंड ऑफ tracking and basically not tracking, this kind of matrix, then you will start your execution. So traceability matrix is a prerequisite for your execution. ये traceability matrix हो जाना चाहिए, ठीक है? So once you are done with this, जब तुम ये लिख लेते हो, इसको तुम 3 तरीके से बना सकते हो। फर्स्ट वन इज कॉल इट एज फॉरवर्ड ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, जहां पर तुम क्या करते हो, इस ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स में रिक्वायरमेंट पहले फिल करते हो एंड देन फिर मैनुअल टेस्ट केस लिखते जाते हो और फिल करते जाते हो, और ऑटोमेशन वाले भी सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं। वंस द मैनुअल इज डन, मैनुअल की बेसिस पे ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिखते हैं और उसके बाद फिल करते जाते हैं यहाँ पर, ठीक है? तो ऐसे करके ये फॉरवर्ड वे में चलता है, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में चलता है, ठीक है? ये फॉरवर्ड हो गया। अब ऐसे ही बैकवर्ड होता है, बैकवर्ड मतलब ये ऐसे चलता है, ये मैपिंग का प्रोसेस ऐसे चलता है। तुम यहाँ से यहाँ तक मैप करते हो, पहले ऑटोमेशन स्क्रिप्ट, फिर मैनुअल स्क्रिप्ट, फिर लो लेवल एंड देन बेसिकली योर रिक्वायरमेंट, ठीक है? और एक होता है बाई डायरेक्शनल में बेसिकली तुम लोअर लेवल रिक्वायरमेंट से चालू करते हो, तो इधर भी जा सकते हो मैप करते करते, और इधर भी जा सकते हो, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट, ठीक है? दोनों तरफ से मैपिंग कर सकते हो। ये जस्ट मैपिंग के अप्रोच है, ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स में मैपिंग के अप्रोच है। एक फॉरवर्ड ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स wherein you try to map the from requirement to the automation script,
and then backward traceability matrix wherein you try to map the automation script to a requirement, from automation script to requirement, and bi-directional wherein you can proceed with both the direction. ठीक है? Yes, sir. कोई क्वेश्चंस इस पे, कोई डाउट्स? रिग्रेशन टेस्टिंग खत्म हो गया है क्योंकि yes, no, anything? No, sir. Cool. चलो तुम्हारा वो देखते हैं, असाइनमेंट देखते हैं। सब लोग असाइनमेंट खोल लो प्लीज। तो लैपटॉप के ऊपर लिखा है, ठीक है। लैपटॉप का क्रिटिकल फीचर क्या है? लैपटॉप hinge is working fine or not, ठीक है। It's a critical feature because without properly working hinge we can't open the laptop, okay, correct, and access it. Test can be done by opening and closing the lid, ठीक है, lid. So now second is basically booting up or not, ठीक है, where your laptop is able to basically boot or not, right, basically start or not. Now any cracks on the top of the lid or body, ठीक है, if there is a crack or a lid crack or something like that, then you have to report it, but it is not a blocker, right? अगर कोई क्रैक होगा या बॉडी में कोई ब्रेकेज होगा तो ये कहीं भी ब्लॉक नहीं करेगा, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. It is not. It's not a critical feature. Keyboard and trackpad is and display is visible properly or not, yeah, this is a critical feature. का कीबोर्ड का हर बटन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ट्रैक पैड सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये टेस्ट करोगे, ठीक है। डिस्प्ले कैन बी टेस्टेड बाय लुकिंग एट इफ इट इज एवरीथिंग इज विजिबल, करेक्ट, इट इज अ क्रिटिकल फीचर। सब चीज अवेलेबल, सब चीज विजिबल है कि नहीं है, हर कॉर्नर ऑफ द हर पिक्सल सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लैपटॉप इज चार्जिंग व्हाइल कनेक्टेड, करेक्ट। तो लैपटॉप चार्ज नहीं होगा तो वंस इट इज डिस्चार्ज यू विल बी ब्लॉक्ड, ठीक है। गॉट इट? Yeah, these are the critical features. Now coming up to the basic features, display quality. Display quality basic feature नहीं है। Now देखो display quality in the sense what exactly you are testing? Sir, the colors are accurate and colors are accurate or not. For ये that, सही it है, needs correct a deep testing. ना, हाँ, बट ये देखो अगर कलर गलत दिख रहे हैं, व्हाइट ब्लैक दिख रहा है, ब्लैक व्हाइट दिख रहा है, ग्रे ब्लू दिख रहा है, तो ये टेस्टिंग मेक सेंस। नहीं तो फिर अगर तो एग्जैक्टली HDR है कि नहीं है ये टेस्ट कर रहे हो तो फिर ये इन डेप्थ टेस्टिंग में आ जाएगा, ठीक है। Yes, sir. CPU and GPU frequency and temperature, yeah, you can test this कि 32 बिट का है तो 32 बिट डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 32 बिट फ्रीक्वेंसी, बिकॉज समटाइम व्हाट हैपेंस, राइट, कि तुमको मल्टीपल प्रोसेसेस करना पड़ेंगे जब तुम इन डेप्थ टेस्टिंग करोगे। तब अगर लैपटॉप स्लो होता है ड्यू टू दिस बिट थिंग, तब इट इज अ प्रॉब्लम। Read and write functions are HDR. This is a good one. Whether you are able to upload and download things or update anything in their laptop, you'll check. Wi-Fi, yeah, definitely this is an important thing. In order to test anything inside the laptop, there might be chances you'll get to connect to Wi-Fi without updating or not. Okay, ये नहीं टेस्ट करना पड़ेगा, like ना, ये तुम टेस्ट कर सकते हो। This is a basic thing. For some features, they might support your updated version of the thing on updated version of the software, so you can check whether the update are reflecting properly or not. Fans are working fine or not during heavy tasks. Okay, cool. These are the basic and critical, but one of the scenario is not that correct, right? जो क्रैक वाला था, बाकी सब सही था, ठीक है। Yes, sir. cool. अभी इसके अलावा कोई सोच सकता है क्या लैपटॉप के ऊपर और कोई बेसिक फीचर? बताओ। The color. कलर ऑफ द लैपटॉप नहीं है, बेसिक तो नहीं है। दिस विल नॉट ब्लॉक यू एनीवेज। Sir, Rain if fight. it is not blocking, then it's basic, na? Not exactly. देखो, color of the laptop is something you can
your main intention of doing the smoke testing is to find the critical and blocker bugs, right? You're just testing the health of the software or product is testable or not. So anyways देखो, अगर तुम टेस्ट नहीं भी करते हो तो ये ऐसी चीज है जो that will you will go and you will see that it is not correct. समझ रहे हो? बट ये ऐसी कोई चीज कंसीडर नहीं कर सकते हो, इसको ऐसा कंसीडर नहीं कर सकते कि इट इज वेरी बेसिक विच नीड्स टू बी टेस्टेड एज पार्ट ऑफ स्मोक टेस्टिंग. तुम ऐसा सोच के देखोगे तो तुमको भी लगेगा कि कलर इज नॉट बेसिक फॉर द लैपटॉप, राइट? सो ईयरफोन जैक तुम टेस्ट कर सकते हो whether it is working fine or not, because in-depth testing में there might be some you need to listen some sort of media, so that needs to be tested. अगर तुम्हारे एप्लीकेशन में अनलॉक के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर है, that also need to be tested, because हो सकता है तुम्हारा जो भी एप्लीकेशन है उसको फिंगरप्रिंट सेंसर का नीड हो, ठीक है? Side ports. साइड पोर्ट्स या USB and all. What else? Sir, Wi-Fi. Wi-Fi is covered. He covered the Wi-Fi. The speakers. Do you need to test the speakers? Yes, no. There's one more important thing. अगर तुमको कोई लैपटॉप टेस्ट करना है तो तुमको सिस्टम डेट एंड टाइम भी टेस्ट करना चाहिए as part of smoke testing. क्यों करना चाहिए? Because sometimes some of the application takes the date and time from your system itself. ये बहुत frequently practicing thing नहीं है. Most of the application which is running over the server, mostly they take date and time from the server itself. But कभी-कभी पहले होता था ये कि they take the laptop date and time for some of the functionalities. Candy Crush में ऐसा होता है, अगर तुमने देखा होगा तो. So वो टेस्ट करना भी इम्पोर्टेंट है. इसके अलावा कोई सोच सकते हो क्या? बहुत इंपॉर्टेंट चीज छूट रहा है. कैमरा, लैपटॉप कैमरा, करेक्ट? Battery. Yes, sir. बैटरी, हाँ बैटरी. चार्जिंग और नॉट ही हैज कवर्ड. चार्जिंग पोर्ट ही हैज कवर्ड. क्या बैटरी यू नीड टू टेस्ट, ठीक है? फ्रीक्वेंटली डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है. Cool. Anything else? Yes. That's it. Cool. Anyone else has done the assignment? No? Okay. Cool. So yeah, this is it for today. Any questions before we wrap it up for today? No? सर इसका पीडीएफ मिल सकता है? I'll share it. Regression testing का ना? यस सर. I'm doing it right away. So yeah, be prepared for the mocks also, guys. ये जैसे ही आपका मैनुअल टेस्टिंग खत्म होगा, I have to give mocks and all, ठीक है? कितने तारीख को स्टार्ट हुआ था ये बैच मैनुअल टेस्टिंग के लिए? When we have started? December 5 I guess. December 5. Okay. Sir, wait 1 minute. I think Sir, December 7. okay. Cool. Regression testing is done. There are a few more types of testing which is left out. Then we have to do test case. Test case will also take 2 days. Then we have to do then we have some like independence topic will be left out, like SDLC, STLC, and your test plan. फिर आप लोगों का मैनुअल टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगा. बट दीज आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? SDLC के अंदर ही 7 मॉडल्स हैं. STLC इज 1 day effort.
and test plan is holistically theory thing, उसको एक ही दिन लगेगा, then your manual testing will be done. ठीक है? Okay, sir. Cool. So it's not that far, like with respect to the completion I'm saying, but yeah, the thing is that how much you guys are preparing. पढ़ा तो दूंगा मैं, but you guys also need to prepare ना. Okay. Okay guys, see you guys tomorrow. Thank you, sir. Thank you.